Hello students, welcome to Ratan classes. Today we are going to discuss about the second part of the cell chapter and that is prokaryotic cell. Last class में बेटा हमने overview of the cell किया था, different types and shapes of cell किया था, unicellular, multicellular organism किया था, थोड़ी बहुत history की थी cell की and cell theory की थी. आज बेटा हम prokaryotic cell के बारे में discussion करेंगे. तो let's see what is a prokaryotic cell. Beta, prokaryotic word itself is made up of two words. One is pro and another one is karyotic. Pro means primitive, जो पहले एग्जिस्ट किए वो सेल, प्रिमिटिव सेल. एंड करियोटिक मींस न्यूक्लियस, जिनका न्यूक्लियस प्रिमिटिव है. इसका क्या मतलब है? मींस दे डू नॉट हैव not well defined nucleus. They do not have well defined nucleus. What is the meaning of not well defined nucleus? बेटा, not well defined nucleus का मतलब है कि न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट. बेटा, कहीं भी साइटोप्लाज्म में एक जगह पे कॉइल्ड होके डीएनए पड़ा है उसे हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं. प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए इन्हें प्रिमिटिव सेल कहा जाता है. बिकॉज ये पहले एग्जिस्ट किए थे बेटा अर्थ पे. कब एग्जिस्ट किए थे? अराउंड 3.5 बिलियन ईयर्स अगो. दैट इज अ प्रोकैरियोटिक सेल. अब बेटा इनके पास और क्या नहीं होता है? इनके पास डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज भी नहीं होती हैं. डबल मेम्ब्रेन बाउंड organelles are absent. बेटा जो ये है ये सिंपल सेल होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल, और ये बेटा स्मॉल भी होते हैं एज कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल. अब बेटा अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करते हैं मींस वी आर टॉकिंग अबाउट बैक्टीरियल सेल. सो लेट्स सी द डिफरेंट शेप्स ऑफ द बैक्टीरिया. Beta, we have four shapes of the bacteria. First one is cocci. Cocci or coccus means spherical. Second one is beta bacillus, that is rod shaped. And beta third one is spirillum, that is spiral shape. And vibrio is beta coma shaped. These all are the four shapes of the bacteria. अगर कोकस की एग्जांपल देखें तो हमें स्ट्रेप्टोकोकस, बेसिलस की देखें तो लैक्टोबैसिलस, स्पाइरल बैक्टीरिया की बेटा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एंड कोमा शेप्ड की विब्रियो कोलरे. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ different shapes of the bacteria. Now let's see beta the structure of the bacterial cell. Beta, this is a typical bacterial cell. Some of the bacteria beta have one additional layer before cell wall, that is glycocalyx. And beta glycocalyx is of two type. One is capsule and another one is slime. Capsule is beta thick layer, thick and hard. टफ और थिक हार्ड लेयर सी कवरिंग होती है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं. और स्लाइम इज बेटा थिन एंड सॉफ्ट. This provide beta protection to the cell. These layers are present to provide protection to the cell. And then beta we have cell wall. Cell wall is beta inner side of the glycocalyx. It provides shape and structure to cell, shape and structure, and also provide beta protection. Now beta, on the basis of the composition of the cell wall, the bacteria is of two types. One is gram positive bacteria and another one is beta gram negative bacteria. Gram positive and gram negative means beta which bacteria take up the gram stain. जो gram stain को ले लेते हैं और stain हो जाते हैं ब्लू पर्पल कलर में, उन्हें हम कहते हैं बेटा gram positive bacteria. जो gram stain को नहीं लेते हैं, कोई कलर नहीं शो करते हैं, that are called as gram negative bacteria. बेटा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल के अंदर थिक पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है और थिन लिपिड लेयर होती है. थिन लिपिड लेयर. But in gram negative bacteria beta it is opposite. They have thick lipid layer and thin peptidoglycan layer. Thin peptidoglycan layer. Now beta let's talk about
the innermost covering, that is the plasma membrane. You can see this brown color plasma membrane. But you will see the plasma membrane is not straight. It will have some infoldings like this. These infoldings are called as beta mesosome. What is the function of the mesosome? Mesosome beta increase the surface area. Okay, they increase the surface area. But when the surface area is increased, that means secretion, respiration, absorption, such functions are also increased. So mesosome help in absorption, secretion, respiration. They also help in the formation of cell wall and DNA replication These are the function of the mesosomes, and they increase the surface area. Now beta, some of the mesosomes, or you can say infoldings of plasma membrane, are filled with some pigments. They are called as beta chromatophore. And beta, these are only present in photosynthetic bacteria. These are only present in photosynthetic bacteria. क्यों बेटा पिगमेंट्स किसे चाहिएंगे? जिसने फोटोसिंथेसिस करनी है, तो ये सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं. उसके बाद बेटा वी हैव इंक्लूजन बॉडीज. दीज आर non membrane bound bodies which will contain the extra material. They will contain the extra material which is not required by the cell. Beta, this is nucleoids. You will see the genetic material is lying freely in the cytoplasm, and where the genetic material is lying, that is called as nucleoid. Nucleus नहीं present है, सिर्फ nucleoid है जहाँ पे genetic material present है एक space. Beta, they have ribosomes. These are also non-membrane bound organelles. Non-membrane bound organelles. एंड बेटा राइबोसोम, कौन से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में? 70s राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. और बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल के राइबोसोम्स हैं वो किसके साथ अटैच्ड होते हैं? सेल वॉल के साथ. दे आर एसोसिएटेड विद द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया. देन बेटा वी हैव flagellum, or also called as flagella. Single is called as flagellum and plural is called as flagella. अब बेटा जो फ्लैजिला है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस फ्लैजिला? बेटा फ्लैजिला का फंक्शन है टू गिव मूवमेंट. सेल में जो भी मूवमेंट होती है बेटा, ये होती है फ्लैजिला की वजह से. दिस टेल लाइक थिंग विच यू आर seeing, the flagella is divided into three parts. One is basal body and hook like structure is there, and from hook there is a beta फिलामेंटराइजिंग. दिस इज बेसल बॉडी, दिस इज हुक फिलामेंट. जो आप ये टेल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज ओनली फिलामेंट, द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला. ये जो दोनों पार्ट है, हुक एंड बेसल बॉडी, दीज आर एम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ये किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे. एम्बेडेड इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और जो हमें स्ट्रक्चर बार टेल लाइक स्ट्रक्चर दिखता है, दैट इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला एंड दैट इज फिलामेंट. देन बेटा पिलाई is this tube like structure. Pillae is small brisk tube like structure which will help to transfer the genetic material from one cell to another cell. That means पिलाई help in sex conjugation. बेटा जब जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरे सेल के अंदर ट्रांसफर करना है, तब कौन हेल्प करेगा? पिलाई हेल्प करेगा. रिमेंबर बेटा, पिलाई डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी. डू नॉट प्ले एनी रोल इन मोटिलिटी. This was beta all about the
prokaryotic cell. In next class beta, we will discuss about eukaryotic cell and different organelles of eukaryotic cell. Thank you.